A very warm welcome to O-level students, and today we are going to solve English language paper 1 reading for May-June 2024 और इसकी ख़ास बात ये है इस पेपर की कि this is from the new syllabus. It is based on the new syllabus. और इसमें सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि you will need insert enclosed, यानी you will have a passage और आपको उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. दिस पैसेज इज टेक्स्ट ए द नॉर्थ शोर, और इस पैसेज में आप देखेंगे कि टोटल 12 पैराग्राफ्स हैं और 1 to 60 लाइन्स हैं. व्हाट टू डू विद दैट पैसेज? आपने क्या करना है उस पैसेज का? फर्स्ट स्किम थ्रू होल पैसेज and familiarize yourself with the setting, environment, feelings, tones और other factors about the passage. कि पैसेज की सेटिंग क्या है, कौन सी सेटिंग में ये पैसेज लिखा गया है, उसका एनवायरनमेंट क्या है और राइटर की फीलिंग्स क्या है. दिस इज द पैसेज. ये पैसेज आपको मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ एंड आई आस्क यू टू हैव द कॉपीज ऑफ दिस पैसेज. Again, I will tell you that this passage has 12 paragraphs and 1 to 60 lines. इस किस्म के पैसेजेस की टोन और इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहला पैराग्राफ होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उस पैराग्राफ को बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं, रीड कर लेते हैं, तो यू हैव एन आइडिया कि इसका एनवायरनमेंट और सेटिंग क्या है इस होल पैसेज की. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, लाइन 1 to 5. सो अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन से इजी वर्ड्स हैं, इजी फ्रेजेस हैं जिनको पढ़ने से हम लोगों को पैसेज की सेटिंग और उसकी टोन के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा. वी हैव अ गुड आइडिया अबाउट द सेटिंग एंड टोन ऑफ दिस पैसेज. फर्स्ट वर्ड इज आइसी विंड. द लेक dipped my paddle into the freezing water. Silence of the morning. Occasional splash of the paddle hitting the water. Familiar landmarks. Outlines of the distant shore. Barely visible on the horizon. These are the easy words, easy phrases. और इससे हम ये एक गेस कर सकते हैं कि राइटर इज पैडलिंग हिज कैन्यू इन कोल्ड लेक अर्ली इन द मॉर्निंग. The environment is very cold and quiet. The writer is looking for shore at a distance, but everything seems unclear and far away because of dim morning light. अब आपको ये इससे थोड़ा सा टोन एंड सेटिंग का आपको गेस हो गया होगा कि what is the scenery of this passage. राइटर जो है वो मूविंग हिज कैन्यू. देखिए कैन्यू एक ऐसा वर्ड है जो मुझे भी नहीं पता था कि कैन्यू का क्या मतलब है, बट आई गेस इट कि समथिंग मूविंग इन द लेक. सो इट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ बोट. So when I check out, so I saw the meaning कि canoe is a type of boat
which is used in the rocky or mountain waters. जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जो पानी और झीलें और दरिया, these are the things where they use the canoe. Paddle, a type of wooden tool जिससे हम स्ट्रोक करते हैं और we make the boat move forward in the river or move backward in the river. So paddle is a type of a tool. उर्दू में हम इसको चप्पू कहते हैं. चप्पू से कश्ती आगे और पीछे जाती है. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट ये है कि इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस, इट्स अ मॉर्निंग टाइम, और मॉर्निंग टाइम में बर्फानी इलाकों में, आइसी एरियाज़ में बहुत पेल मॉर्निंग लाइट होती है, बहुत हल्की मॉर्निंग लाइट होती है. और राइटर के फीलिंग्स क्या थी कि राइटर वाज सर्चिंग फॉर फेमिलियर लैंडमार्क्स, कि कोई चीज़ नज़र आए फेमिलियर, कोई लैंड नज़र आए, बिकॉज ही वॉज इन द लेक. फेंटली ट्रेसिंग द आउटलाइंस ऑफ डिस्टेंट शोर, बहुत हल्की सी ट्रेस किया उसने डिस्टेंट शोर को. बेयरली विजिबल ऑन द होराइजन, होराइजन पर बिल्कुल हल्का सा उसको डिस्टेंस शोर नज़र आ रहा था. सो दिस वाज द होल पैसेज, और इसकी आपने छोटी सी एक समरी भी की. अब इसके बाद यू कैन गो टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन से पहले आई वुड लाइक कि आप एक वीडियो देखें, तो उस वीडियो से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ दिस पैसेज. लुक इट हियर. This is the writer, and he is paddling his canoe into the water. It's very cold, very icy, occasional splash. This is the river, these are the rocks and the forest. So this is the scenery where writer is writing this passage. You can see this lake full of ice, so it's very difficult to paddle into these ice. Far away distant shore, barely visible on the horizon. This is the canoe, these are the paddles. So this was just a little bit of आपको फील कराने के लिए, टच कराने के लिए वीडियो मैंने ऐड किया है. I dipped my paddle into the freezing water. ये पैडल है. And he dipped his paddle into the freezing water. Occasional splash of the paddle hitting the water. कभी कभी आपको बहुत ज़ोर से झटका लगता है, स्प्लैश होता है जब you put the paddle into the water. This is the canoe. Outline of the distant shore barely visible on the horizon. ये देखिए एक पिक्चर है कि अगर pale dim morning light in the icy environment, you will see here that के ये outline है distant shore की, और barely visible on the horizon, उफक पर बहुत हल्का सा ये नज़र आता है pale morning light में. So this was some pictures and video to give you a feel about the passage. Now we can go to the question and find out the answers. Question 1a. In paragraph 1, give one reason why it was difficult for the writer to paddle his canoe in the icy water. अगर हम पैसेज में जाएं तो पैसेज में
we will have these lines. I dipped my paddle into the freezing water, tried to move the canoe forward. Each stroke felt heavy, as if the water were resisting my every movement, making it harder to paddle the canoe. This is the important sentence. So this is the reason why it was difficult for the writer to paddle his canoe in the icy water. It was very difficult to move the paddle of the canoe in the icy water. करेक्ट और फॉर्मल आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट या फॉर्मल आंसर ये होगा कि इट वॉज डिफिकल्ट टू पैडल बिकॉज द वाटर वॉज पुशिंग बैक, मेकिंग ईच स्ट्रोक फील हैवी. नेक्स्ट क्वेश्चन 1B, यूजिंग योर ओन वर्ड्स. नाउ मैंने आपसे ये कहा था कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स हो गई हैं. अब बिल्डिंग पैसेजेस में राइटिंग भी टेस्ट होगी. सो यूजिंग योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट द टेक्स्ट मीन्स बाय फेंटली ट्रेसिंग. लाइन 4 में ये फ्रेज मौजूद है. यू हैव टू टेल व्हाट यू मीन बाय फेंटली ट्रेसिंग. Faintly, look at here. I squinted through the pale morning light. बहुत तकलीफ आंखें छोटी करके I have seen the pale morning light, through the pale morning light. My eyes searching for familiar landmarks, faintly tracing the outline of the shore, barely visible on the horizon. So almost barely visible synonym है faintly tracing का. So let's see the answer. Question क्या है? Use your own words. Explain what the text mean by faintly tracing. Faintly tracing mean barely visible, और बड़ी मुश्किल से किसी चीज को ट्रेस करना, तलाश करना. Faintly tracing means barely able to follow the outlines of the distant shore with their eyes because it was hard to see clearly in the pale morning light. So writer जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. So writer was barely able to follow the outline of the distant shore with their eyes because it was hard to see clearly in the pale morning light. So ये दो आपके क्वेश्चंस थे जो पैराग्राफ 1 से रिलेट करते थे. In the next lecture we will go to the second question.